ओके बेटा, सो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज called as a missing course or a missing leg topic. This is basically they give you a summary that ship was going from one place to another place. From this time it steered this course, then it steered this course, this course, this course, so on. And one of the legs in between they will not tell you. So they will tell you okay, from this time to this time the course steered is not known. This is a highly unrealistic case. This will not happen practically. You will know what you are steering. But this is to test your understanding of passage planning, plane and parallel sailing, these kind of concepts. So we have to find out what was the course steered by the ship during that interval. So this is what is required. So what we will do is I will show you a question which has come in our past papers on this topic, and we will try to solve it on the chart. So that will give us an idea how it is to be done. The technique what we follow in these questions is, you see our passage plan is basically a combination of vectors. You have the CTS vector, then the current vector, then the next CTS, so on. So all these vectors are combined, and once they are combined, you reach to your destination. Now, vectors can be combined in any order. So if a particular course is missing, you can leave that, you can apply the next one, remaining all the vectors which are known to us. Once they are applied, we are easily able to identify what was the missing course in the end. So let's try to understand it using an example. So shall I open up the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's go. Now, beta, we have understood the concept theoretically. Let's try to further understand it using a practical example. So I'm going to pick up a question based on this topic of missing course or missing leg, which has come in our past papers. We will try to plot it on the chart, and we will try to understand the solution practically now. The question says, at 0530 hours, a vessel was in position with Lundy Island south, bearing 030 true, 6 miles off. She steered a certain compass course, and her engine speed was 9 knots. After 1 hour, that is at 0630, she altered her course to due north and increased the engine speed to 12 knots. At 0700 hours, that means after another half an hour, the bearing of Lundy Island North was observed to be 120 degrees true. The current in the area was setting 330 at a rate of 3.5 knots. Find her position at 0700 hours and the initial course steered. This question is based on chart number 5047. So we will just have that part of the chart displayed on the screen here, and we will try to proceed following the method which we just now discussed. So as you can see, they have given us the passage from 0530 to 0700. It's a 1.5 hour passage. And in this passage, they are asking us to find out the course which the vessel steered for the first 1 hour. From 0530 to 0630, she steered a certain compass course,
and that is what we need to find. Second thing we need to find is the position at 0700 hours. So let's open up the chart of the area and let's see how do we proceed ahead and follow the concept which we have learned. We have the area displayed on the screen now. Let's first identify these lights which are mentioned in the question. The light which is highlighted right now on the chart is the Lundy Island South light. Now at 0530, the Lundy Island South light was bearing 030 and it was 6 miles off. So this information basically gives us a position at 0530 hours, a fix. So let's plot this position. You can see the 030 bearing being plotted on the chart. Now on this line with a distance of 6 miles off, 030 bearing and a distance of 6 miles off, if you make an arc with a radius of 6 miles centered at this particular light, the point where the arc cuts this PL, cuts this bearing line, is our position for 0530. So you can see the time which is marked. It is the 0530 position. The bearing and range is also marked here, 030 into 6 miles off. Now, the initial course which the ship steered is not known to us. So we cannot plot the 0530 to 0630 track. But as we just now discussed in the method of vector addition, that whatever information is available to us, we will be plotting that information. So what I'll do is I will plot the next course information which is available to me. At 0630, she altered her course to due north and the speed was 12 knots. And she steered this particular course and speed for half an hour. So we will plot that on the chart. But before that, let's identify the second light which is given here. The second light which is given here referred in this question is the Lundy Island North light. At 7 o'clock, it was observed to be 120 degrees true. So you can see on the chart, this light which is highlighted is the Lundy Island North light. At 0700, this light was observed to be on 120 bearing. So this gives us a position line for 7 o'clock. So you can see the position line plotted on the chart. And this line is applicable for 0700 hours. The vessel should be somewhere on this line at 7 o'clock. I have marked off the bearing of the lighthouse, which is 120. Now, as I told you that whatever information is available to us, we will be plotting that information. So from 0630, we have steered a course which is due north and our speed was 12 knots. So for half an hour, that is from 0630 to 0700, the distance covered would be 6 miles. So from this point A, which is my initial position at 0530, I'm going to draw this particular course and distance vector. So it will be 000 and the distance would be 6 miles. And it represents the track or the course steered from 6:30 to 7 o'clock. So let's plot this vector starting from point A. You can see this vector plotted on the chart now. The point where this vector ends, let's name that point as Bravo. So this was the information available to us from 6:30 to 7 o'clock, which we have plotted on the chart. Now the next information given to us is
The current in the area was setting 330 at 3.5 knots. So this current has affected us for the entire duration of the passage, that is 1.5 hours. So the next thing which I am going to plot from point B now is the current vector for this entire period. The current for this entire period will set us in a direction of 330 as mentioned in the question. And with a speed of 3.5 knots in 1.5 hours time, the drift would be 5.25 miles. So this is the drift from 0530 to 0700. That is for the entire duration of the passage. So let's plot this vector on the chart. The direction is 330 and the distance is 5.25 miles. You can see the vector plotted on the chart now. The point where this current vector ends, that is C point. You can see this point C marked on the plot. Now we know that from 7 o'clock to 7:30 for a period of half an hour, the vessel was moving at a speed of 12 knots. See, you can see at 0630 the course was altered and the engine speed was increased to 12 knots. And till 0700 hours, there was no change in the speed. So from 0530 to 0630, the speed was 9 knots. And this passage from 0530 to 0630 is the unknown passage, which we have to find out. So now we have plotted our track or course steered from 6:30 to 7. We have taken into account the current which is acting in the area. The only thing remaining now is the course steered vector from 5:30 to 6:30. Now we do not know what was the course which we were steering, but we know that the distance steamed, engine distance steamed in this particular interval is 9 nautical miles because the vessel was moving at a speed of 9 knots. So from point C, my CTS vector can go in any direction. I do not know the direction because I do not know my course steered, but I know for sure that the length of my CTS vector has to be 9 nautical miles. I know from 5:30 to 6:30, I covered a distance of 9 nautical miles. So I'm going to use this information. I'm going to open up my compass equal to 9 nautical miles. Place or center that compass on point C and draw an arc. So I'm going to draw an arc. Now this arc is going to cut my 0700 bearing line at a certain point. So let's place our compass at C, which is open equal to a radius of 9 nautical miles, and draw an arc. You can see this arc plotted on the chart here. The point where this arc cuts my 0700 bearing line, let's name that point as D. Now this D point is my fix at 0700. Now, how is this point the fix, the position at 0700? Because you see, the fix has to be 9 miles away from the C point because the distance, engine distance steamed in this particular interval was 9 nautical miles. So this point delta fulfills that requirement. It is 9 nautical miles away from the C point. That is my distance steamed between 5:30 to 6:30. The second condition which it has to fulfill is
that at 7 o'clock, my position has to be somewhere on this position line. So this is the only point which fulfills both these conditions. It is 9 miles away from C and it is situated on the 0700 bearing line. So there is no other point which satisfies that criteria. If I place my compass centered at C, radius equal to 9 nautical miles, and make a full circle, this is the only point which will lie on the 0700 PL, telling me that this is my fix. Sir? Go ahead, beta. सर ये मतलब ये तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया है, पर ये कैसे, मतलब हमने पीएल जो ली वो 530 की थी, उस पीएल से जो हमने डिस्टेंस और अपना कोर्स मार्क किया वो 630 to 700 का था, राइट। फिर उसके बाद हमने जो B2C मार्क किया वो 530 to 700 था, मतलब दैट इज द करंट बेटा, 530 to 7। मतलब हाँ जी, मतलब ये जो कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब बड़ा अजीब सा हो रहा है। अभी तक जो चार्ट वर्क करते आए हैं और ओके बेटा, ओके। हाँ जी सर। अभी बेटा प्लॉट कंप्लीट करते हैं पहले। अभी तो हम अबाउट 50% क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको इसका एक्चुअल ट्रैक भी दिखाता हूँ। शिप का जो एक्चुअल ट्रैक है वो ये नहीं है। दिस इज जस्ट ए वेक्टर एडिशन विच वी हैव डन टू फाइंड अवर CTS। अभी हम इसका एक्चुअल ट्रैक भी बनाएंगे, देन होपफुली बेसिकली हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं विद द चार्ट वर्क। दैट इज राइट बेटा, दैट इज राइट। मतलब क्योंकि चार्ट वर्क के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, बट मैथमेटिकली हाँ ये ठीक होएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस और कोर्स आगे पीछे लें चाहे जैसे मर्जी लें, आना तो आंसर फिक्स 700 का वही है। एग्जैक्टली बेटा, दैट इज द प्रिंसिपल विच वी आर यूजिंग, दैट इज एग्जैक्टली राइट। ठीक है सर। हाँ, अभी मैं आपको इसका एक्चुअल ट्रैक भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है। ओके। So we have found out our 7 o'clock position. Now what I'm going to do is I'm going to join these 2 points, C and D, Charlie and Delta. Now this line CD basically represent my CTS vector from 0530 to 0630. This is the course to steer vector from 0530 to 0630. Because all the vectors added up should take me to my final position. So we can align our parallel ruler with CD, take it to a compass rose and read out. This is the course steered by the ship from 0530 to 0630. This is the true course steered. Now, if you want to find out the compass course steered, you have to apply the compass error, the deviation and the variation, and it will give you the compass course. सर गो अहेड बेटा। सर फिर तो अगर ये जो अब CTS आ गया, अगर हम इसको अगर वो फिक्स है सही, तो हम इस CTS को इनिशियल पोजीशन पे फिक्स करके ट्रांसफर करके देन उस पे ये नॉर्दर्ली कोर्स मार के करंट मारेंगे तो वो वही आएगा सर, वही आना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी मैं यही आपको करके दिखाता हूँ। जो ये हमें मिला है अभी ना CTS, हम इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे लगाते हैं and then we will see whether we reach back at 7 o'clock position or not. Okay, sir. Okay, so we will see the actual track now. So we have obtained what was required in the question. Find her position at 0700 hours and the initial course steered. Both the items have been obtained. Now, once this much is done, one important thing to remember here is that this track which we are seeing on our plot, starting from A, that is my initial position, going to B, then B to C, and C to D.
this is not the actual track followed by the ship. Why it is not the actual track? Because the first vector which we have placed here, 0630 to 0700, that is north with a distance of 6 miles, is not the first course which the vessel steered. It is the course steered from 630 onwards. The first course which the vessel steered is CD, Charlie Delta. So to find out the actual track of the ship, we have to now plot our courses and distances in the correct chronological order. So let us now plot our courses and distances as they actually happened. So it is not asked in the question here, but it's a very good idea to plot it on the chart. So in some of the question, this may be required also by the paper setter. He may ask you to give you the actual position of the ship at 630 or any intermediate point. So for that, you will need to draw the actual track of the ship. So let's now plot the actual track of the ship. I know my course steered from the direction of the CD vector now. This is the course steered from 0530 to 0630. So from point A, the first vector which I draw now is same as vector Charlie Delta. So this is the course steered from 0530 to 0630. Let's mark it with a single arrow. That is the symbol of the course steered. Now the point where it ends, let's name that point as eco point, E point. Now let's apply the current also for the first hour. I have the set of the current 330. I have the rate of the current also, which is 3.5 knots. So from point E, I apply my current vector. Now be careful, this current vector is for 1 hour duration now, because my CTS vector is also for 1 hour duration. I am making a 1 hour triangle in the beginning. So let's mark it with 3 arrows, the symbol for current vector. Now once this current vector is plotted, the point where it ends, let's name that point as F. F is our fix at 0630. And if you join my initial position A with the fix here at F, it gives me the course made good from 0530 to 0630. This is the actual track on which the ship moved from 530 to 630. Now, one important difference here is you see the current vector which I used in this diagram is for 1 hour. The current vector which I had used in my initial plot was for the full duration of 1.5 hours. Okay, that's the difference. Even when you use it for total 1.5 hours, we were still able to reach to our destination because, as we discussed before, the principle of vector addition says that in whatever orders the vectors are added up, the end result or the position arrived is the same. So let's now proceed ahead from point F. The next course which I steered from 630 to 7 o'clock was 000, and the distance was 6 miles, represented by vector AB. So I have plotted this vector here, which is my CTS from 630 to 7 o'clock. And the point where it ends, let's mark it as G. And this vector here, the blue color vector, the CTS vector, has a direction of due north 000 and has a length of 6 nautical miles, exactly same to vector AB. Now from the point G, where my CTS vector ends, I now plot my current vector for half an hour, that is 6:30 to 7:30. This triangle which is being made is for half an hour.
Let's plot the 3 arrows for the current vector, and it will take us to our 7 o'clock position. You will see that when you plot this current vector, it takes you to the exactly same position, the 7 o'clock position, which we earlier found out. Now, if you join F with the final position delta, this gives me my course made good from 0630 to 0700. So you can see the actual track followed by the ship from 5:30 to 6:30. This is the 6:30 position, and from 6:30 to 7 o'clock, and this is the 7 o'clock position. So this completes our missing course or missing leg question. So does the actual track now make the entire picture clear, beta? Yes, sir. Yes, sir, clear. So this is what we follow in these questions, beta. Whatever information is available to us, we keep on plotting it, and we take the unknown part to the end. And once you plot all the available information, in the end, you will be able to get your final position as well as the unknown or the missing part. So this is what we call as a missing leg or a missing course type of question. So have a good look at it, beta. Let me know any doubts coming in your mind. सर ये फिश ट्रायंगल बन गया सर. ओके, ऑलराइट. इसमें बेटा बहुत अजीब अजीब से शेप्स बनते हैं. सो इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना मिसिंग लेग वाला, समटाइम व्हेन यू रीड इट इट कैन बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट फॉलो दिस प्रिंसिपल that whatever information is known, keep on plotting it, and you will see it getting simplified, giving you the answer. So बड़े अजीब अजीब से plot इसमें बन सकते हैं, which are very unconventional plots. So don't get afraid of the drawings. Follow the principle and you should get the answer. Okay. Okay. Let me give you a screenshot so that you have it. ओके बेटा, मैंने ये चैट पे आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, so you can save it. You can, if you want, you can practice it on the chart also. This is on chart 5047. Okay beta, all right. So this was what was planned for today, and with this we basically complete the entire chart work syllabus. So done beta, completed. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. सर एग्जाम शेड्यूल चेंज कर दीजिए सर. एग्जाम का क्या है सर? अब क्वेश्चन बेटा सीक्वेंस चेंज कर दो सर एग्जाम का. It will be difficult. It will be difficult बेटा. सर टॉपिक बता दीजिए, किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन दे रहे हैं वही बता दीजिए सर चार्ट वर्क में. चार्ट वर्क के इतना तो कर सकते हैं ना सर. हाँ, थोड़ा आइडिया दे दो सर. टॉपिक दे दीजिए सर, वो टॉपिक हम ज्यादा फोकसली रेडी कर लेंगे. अभी तो टाइम नहीं है सर इतना कि इतनी प्रैक्टिस करने का. लास्ट मॉड्यूल में हुआ चार्ट वर्क तो. ओके, टॉपिक्स बता देते हैं बेटा आपको. सर पूरा सिलेबस मत बताइएगा. जो आ रहा है वही बताइएगा. ओके, हाउ डू यू गो अबाउट इट?
सर ये जो अभी मिसिंग लैग वाला क्वेश्चन करवाया है, इसकी सर फ्रीक्वेंसी कैसी है क्वेश्चन की सर? आई वुड से बेटा कि 2-3 पेपर में एक बार ही आ जाता है। इन ईयर सर? नहीं, एवरी सेकंड और थर्ड पेपर यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कमिंग अप। ओके, सो ये आ जाता है बेटा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेविगेशन पेपर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारा पेपर जो है ये कैसा होगा। इनफैक्ट एनी पेपर, नॉट ओनली द पेपर विच इज़ कमिंग हियर, वो पेपर तो मुझे भी पता नहीं है। बट नंबर 1 बेटा, जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए में हमारे 3 सवाल हैं एंड इनमें से एक क्वेश्चन 90% ऑफ द टाइम इज ऑन पैसेज प्लानिंग। ओके, नाउ पैसेज प्लानिंग इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने जो नोट आपको भेजा है पैसेज प्लानिंग का, जस्ट ऑन दैट नोट सी कौन कौन सी आइटम्स हमें चार्ट पे प्लॉट करनी होती हैं। मेक श्योर यू हैव ए वेल लेबल्ड प्लॉट ऑन द चार्ट, एग्जैक्टली यू डू इट ऑन बोर्ड एंड उसका एक डायग्राम या एक टेबल हमें आंसर शीट पे बनाना होता है, द वे पॉइंट टेबल विच वी हैव। So we make the waypoint table on our answer sheet. So that takes care of the passage planning question beta, right? बाकी के जो 2 सवाल हैं ये चार्ट वर्क के डिफरेंट प्रोसीजर्स पे आते हैं। सो प्रोसीजर्स कुड बी एनी, लाइक जैसे हमने ये अभी मिसिंग लेग का किया है, या आप देखो चार्ट वर्क में हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पोजीशन लाइन एंड पोजीशन सर्कल के कॉन्सेप्ट्स हैं। So which are the methods to plot the position lines and position circle and how do we transfer them? If those concepts are clear, then those concepts are used almost, I would say, in about 90% plus questions. Okay? तो मतलब सर उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। Exactly. और उनमें बेटा फॉर्मूले हैं, जैसे वर्टिकल एंगल का फॉर्मूला है, राइट? हॉरिजॉन्टल एंगल की कंडीशंस हैं, लेस देन 90 में क्या करते हैं, मोर देन 90 में क्या करते हैं, GR और PLR के फॉर्मूले हैं, राइट? सो दीज यू शुड रिमेंबर। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है चार्ट वर्क में, सो दीज आर द ओनली वंस विच आर देयर। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकते हैं, दे कुड बी आइदर 3 पॉइंट बियरिंग, वी हैव डन दैट, सो वी नो 3 पॉइंट बियरिंग हम डालते हैं, लाइन एंड देन पैरेलल लाइंस गिव्स अस द CMG एंड वी कैन कंप्लीट द ट्रायंगल। ओके, सो फिश ट्रायंगल जो हमने किया था, एज आई टोल्ड यू, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है आने की, सो इट कम्स रेयरली। रेंडेवू क्वेश्चन की भी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, you can say maybe once a year it may appear in the paper. So this should take care of your chart work part. Yeah, that's done. एक हमने टॉपिक किया था ब्लाइंड नेविगेशन का, सो यू नो दैट कॉन्सेप्ट नाउ कि ब्लाइंड नेविगेशन में अगर हमें रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी सिनेरियो मिलता है, हाँ, हमारा जो फाइनल ट्रैक है इट शुड बी पैरेलल टू आवर PL. सो वंस यू रिमेंबर इट, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन। सो ये तो हमारा पार्ट ए हो गया, दिस शुड टेक केयर ऑफ पार्ट ए। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस द असाइनमेंट, आई डोंट थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस एनी मोर बेटा, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट टेक्स केयर ऑफ द चार्ट वर्क पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में बेटा एक क्वेश्चन तो हमारा कंफर्म है GC और कॉम्पोजिट का, सो यू शुड बी थॉरो विद कोसाइन फार्मूला एंड नेपियर रूल, right? So that takes care of that question. That is the only thing required. Then 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं either on side solving methods or on plotting. Plotting is basically like chart work only. उनमें होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ PL या ट्रांसफर ऑफ PC, यही तो होता है प्लॉटिंग में। सो चार्ट वर्क की तैयारी अगर हो गई तो प्लॉटिंग इनडायरेक्टली इज रेडी। एंड साइड सॉल्विंग में जो है the 5 methods which we have been doing from pre-C onwards, Marpas, long bicone, intercept, X meridian, Polaris. This takes care of part B. Then coming to the third part. थर्ड पार्ट जो है हमारा, उनमें आप देखो जो नंबर 7 क्वेश्चन है, 7, 8, 9 3 सवाल है। नंबर 7 क्वेश्चन 90% ऑफ द टाइम्स इट इज ऑन स्टार सूटेबल फॉर साइट। ओके, सो हमने वो स्टार्स निकाले थे ना बेटा, फाइंड द स्टार्स बिटवीन so many degrees of our angle having this much magnitude. So you have that table on page 268. So that is the question number 7 which we have. Then 8 and 9 are based on principles of navigation. They could involve the concept of rational horizon or
उनमें थ्योरी के सवाल भी आ सकते हैं। बेटा आई गिवन यू ए लिस्ट ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस? यस सर। नो सर। यस सर, दिया है सर, पेज नंबर लिखा है जिस पे सब मेंशन किया है, वही ना सर? यस मैंने सर। आपको अबाउट 14-15 क्वेश्चन जो है वो निकाल के दिए थे। इफ यू डोंट हैव, आई कैन शेयर इट अगेन। सर वो पैसेज प्लान वाला एक बार दिसंबर बैच में सेंड कर देंगे प्लीज। मैं अभी यहीं शेयर कर देता हूँ बेटा, गिव मी अ मिनट। ये लो। हाँ जी सर, पैसेज प्लान वाला भेजना सर। पैसेज प्लान ना बेटा, आवाज चली गई तुम्हारी। सर जो मैसेज है सर, वो बॉक्स आता है ना आना है, तो उसमें क्या क्या चीज लिखी, मतलब मुझे बस इतना समझ में आया कि पैसेज प्लानिंग में बॉक्स में क्या क्या चीजें लिखनी है। हाँ सर, वही पूछ रहा है वो। हाँ सर, मैंने कहा था ना वेबसाइट्स लिखनी है, वही पूछ रहा हूँ सर। अभी चैट पे मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, पैसेज प्लानिंग नोट्स। उसको खोलो, उसमें तुम्हारे जवाब का आंसर, क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखा होगा बेटा। थैंक यू सर। खोल के मुझे बताओ, धन्यवाद देख के आंसर मिला? सर। ये दिक्कत है। नो प्रॉब्लम, भावनाओं को समझ गया मैं बेटा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस रिपोर्ट एंड आपको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि हमें चार्ट पे क्या प्लॉट करना है, और हमें जो हमारा टेबल होता है, जो आंसर शीट पे हम बनाते हैं वे पॉइंट टेबल, उसमें क्या शो करना है। दोनों चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। सो जस्ट फॉलो इट बेटा। एनी पैसेज प्लानिंग क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू क्रैक इट वेल। ओके, सो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, पेपर में हमारे नेविगेशन के पेपर में टाइम इज़ पैरामाउंट। टाइम जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन है, इट्स ए टाइम ड्रेनिंग क्वेश्चन, इट्स ए टाइम वेल। इसमें टाइम निकलता ही चला जाता है, बिकॉज यू कैन एलेबोरेट टू एनी एक्सटेंट पॉसिबल। सो इसको अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो स्पेशली दिस पैसेज प्लानिंग क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ टाइम। डोंट स्पेंड मोर देन 22 minutes। 22 minutes is the golden period we have. This is the time for one question. So preferably you should be able to complete a question in 20 minutes. अगर आप 20 minutes में इसको complete करते हो, you will have about 10-15 minutes in the end for revising the paper. So इतना टारगेट आपने रखना है जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, एनी पेपर, नॉट ओनली नेविगेशन, दिस इज ए टिप विच आई एम गिविंग यू। कोई भी पेपर अगर आप अटेम्प्ट करते हो, हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस को सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। सो व्हेन यू रीड द पेपर, इमीडिएटली आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी विच क्वेश्चंस आर ईजी, जो आपको आते हैं। आप बोलोगे अरे वाह, ये तो कल ही पढ़ा था मैंने, ये आ गया, आई नो इट हाउ इट इज़ टू बी डन। सॉल्व दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। सो नॉन क्वेश्चन जो आपको आते हैं इजी फॉर यू, उनको पहले आपने सॉल्व करना है क्विकली, एज मच एज क्विक एज पॉसिबल। सो once you have done 3-4 questions, confidence is going to build up, the speed is going to pick up. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप थोड़ा सा डाउटफुल हो, हाँ ये थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, अटेम्प्ट देम इन द मिडल। और कुछ एक सवाल जो आपको ऐसे लगते हैं कि ये बिल्कुल ही आउट है, आई डोंट नो क्या करना है इसका, सिर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कीप इट फॉर द एंड बेटा। डोंट ट्राई a difficult question in the beginning, so that is going to waste your time without much of an use. Keep it for the end. हो सकता है MMD में भी ऐसे ही कर सकते हैं? Yes, you can बेटा. Our paper doesn't say that you have to do them in the serial order. You can pick up an order of your choice. बस एक ही रिकमेंडेशन इसमें है कि अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स को ब्रेकअप करना अवॉइड करो। नॉट दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वेरी मच एक्सेप्टेबल, बट क्या होता है कि पेपर चेकर को फिर थोड़ा एफर्ट लग जाता है। ही विल हैव टू गिव द मार्क्स एट 3 different places एंड देन एड अप। तो उसका काम अगर आप बढ़ाओगे, he gets annoyed, दैट विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ मार्क्स।
So other than that, yes, you can pick up a order of your choice. सर ये एग्जाम्स की टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा? What timing you want बेटा? सर 10 बजे से कर लें? देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ. आई विल हैव टू सी. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको कर दूंगा शिफ्ट बेटा 10 o'clock onwards. बट आई कैन नॉट गारंटी राइट नाउ. 10 o'clock ठीक रहेगा सर. आई विल ट्राई बेटा. मुझे आपकी ये मिल गई रिक्वायरमेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट इफ इट कैन बी पुश्ड ऑन टू 10. एंड सर ये मंडे को एक्चुअली मेरे एरिया में पोलिंग होने वाली है. इलेक्शन चल रहा है तो चांसेस है कि उस दिन थोड़े नेटवर्क वीक रहेंगे. Okay. See beta, if there is a minor breakage, you are disconnected and you reconnect again within 2-3 minutes, that's okay. That's not an issue. But अगर लंबा कट लग जाता है, then we will have to review it beta. Okay. Okay. So no issue. अगर लंबा कट ऐसे लग जाता है, then we can arrange a re-exam again on Saturday maybe. ठीक है सर, शुक्रिया. Okay. So does that make you comfortable? Yes sir. Okay. सर आपने क्वेश्चन आया था सर ये चार्ट वर्क के अंदर में, जिसमें सर एक हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल होता है एंड देन वी आर स्टडीइंग सम कोर्स, देन सर वो कैसे अप्लाई करना है, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर, सर्कल, रेजिंग डिपिंग सब एक साथ हो गया ना उसमें, हाउ टू गो अबाउट, कैसे करना है उसको? बेटा कोई सवाल है ऐसा जो आपके पास है? कैन यू शेयर ए क्वेश्चन? हाँ सर, आपने कहा असाइनमेंट 3 नंबर 5 क्वेश्चन सर. असाइनमेंट 3 नंबर 5. ओके, अभी खोल देते हैं बेटा. असाइनमेंट 3 नंबर 5. ओके, असाइनमेंट 3 नंबर 5. गिव मी अ मिनट. एंड सर आप असाइनमेंट 6 बता रहे थे ना, कुछ 5 और 6 भी भेजने हैं. आई डिडंट सेंड यू 5-6 बेटा. सर 4 ही मिले हैं सर. नो सर. ओके ओके, अभी भेजता हूँ बेटा. 1 मिनट दो मुझे, अभी भेजता हूँ. सर सॉल्यूशंस भी साथ में. एक बार इनको अटेम्प्ट मार लो बेटा, फिर मैं सोल्यूशन भेज दूंगा. जस्ट रिमाइंड मी टुमारो. ओके, जस्ट ट्राई इट आउट टुडे. सो शुरू में सर मंडे को भेजूंगा, फिर करने का मन नहीं करेगा बेटा. क्लास तो कल तो एग्जाम है सर मंडे को. अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एग्जाम है सर. तो सोल्यूशन साथ में चाहिए. हाँ सर, तो देखो देख लेंगे ना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. असाइनमेंट 5 और 6 मैंने आपको भेज दी है. ठीक है, सोल्यूशन भेज देता हूँ बेटा. बट ट्राई इट आउट फर्स्ट एंड देन हैव ए लुक एट द सोल्यूशन. ओके बेटा, असाइनमेंट 5 और 6 इज इन योर चैट एंड दोनों के सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दिए हैं. सो यू हैव द सॉल्यूशंस आल्सो. And now we come to assignment 3 question 5. Let me take it you there. Here we are beta. That is assignment number 3 question 5. We have it on the chart. Now is this the one? Yes sir. Okay. I think ये तो हमने डिस्कस किया था कल बेटा. Anyway, let's see.
A12 Hookhead Lighthouse bore this much, Kronenberg light vessel bore this much, vessel then steamed a course of 182, maintaining same course, lighthouse dips at 1014. Right, there were two position circles here. एक तो ये HSA से आया है पोजीशन सर्कल और दूसरा पोजीशन सर्कल डिपिंग रेंज से आया है. So they are intersecting and the intersection point is the fix. इसमें क्या डाउट है बेटा? सर ये जो इंटरसेक्शन हुआ है सर, ये तो दूसरी साइड बनेगा ना? Means here बेटा at this location? No, that intersection from जहाँ से ये 190 स्टार्ट किया आपने, ये कॉननबर्ग लाइट वेसल से, ये वाला उस साइड बनेगा ना? ओके सर, मेरी गलती है सर, मैंने उस साइड ना दिया इसको. द इंटरसेक्शन. Intersection means you made the circle on this side? Yes sir. Yes sir. Okay. इसमें बेटा अगर आपको डाउट होता है ना कि शिप कौन सी साइड में है, बिकॉज यू सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि शिप कौन सी साइड में है. यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है आई थिंक इज ग्रेटर देन 90. या इट इज 128. यस सर. So you have to make it, the center has to be made opposite to the side where the ship is. Correct? Yes. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि शिप कहाँ पे है? बिकॉज इस केस में तो दोनों तरफ ही नेविगेबल वाटर है. तो ऐसे केस में बेटा आप क्या करो, जो कंपस बियरिंग्स है ना उनको रफली अपने चार्ट पे ड्रॉ करके देखो. When you draw the compass bearing, you will get an idea whether the ship is on this side or on this side. Then you can pick up your center. Okay sir. Okay? Okay sir. Right beta, right. Okay. 3 and 4 के भी आंसर्स भेज दो सर, आंसर नहीं है. 3 and 4 के मैंने नहीं भेजे थे बेटा. नहीं सर, आपने नहीं भेजे. ओके, अभी भेजता हूँ. 3 and 4 हाँ. Okay, they are also there in chat now. 3 and 4. Have a look. Yes sir, thank you. Okay. So shall we break off बेटा? हमारा लंच टाइम निकल गया. अभी शाम तक लंच ही है सर. अभी मंडे से सर एग्जाम्स हैं सर. नेवल आर्किटेक्चर की कुछ सर बता रहे थे कि क्लासेस बाकी हैं सर. सो वो एग्जाम के बाद होंगी राइट? ओके बेटा, मैं सर से बात कर लूंगा. एज ही सेज आई विल पुट दीज क्लासेस. मॉर्निंग में हमारा एग्जाम रहेगा. वी विल हैव द आफ्टरनून्स अवेलेबल. तो आफ्टरनून में मैं आई विल शेड्यूल सर्स क्लासेस. ओके सर, थैंक यू. Okay. Okay. So shall we break off beta if everything is okay? Yes sir, no problem. आजकल तो सर यही हमारा लंच टाइम हो गया है. ओके. पर देखो मैंने तो बेटा बिल्कुल आपको जैसा बोला था उतना टाइम में खत्म कर दिया. Of course sir, of course sir. Right. So see you beta. See you in the next class and December batch in exams. So till then, bye bye. Bye sir. Okay beta, bye bye. Thank you sir, bye bye. Sir please recording save कर दीजिएगा. Yeah, I'll do that.